Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7, the role of government and citizen is its name, and today I will deliver its 7th lecture. Before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer them. You can also pause the video. What steps have you taken to serve your community? Very good. Okay, my dear students, now in today's lecture, the students will be able to describe what the government does to meet the needs of the citizen. So, हम already ये SLO complete कर चुके हैं, but today we are going to make a project on it. So, let's have a look. Okay, my dear students, so Islamic perspective देख लेते हैं. O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So, a pre-reading question, quickly tell me that which services are provided by the government to its citizen? Education, healthcare facilities, transportation, waste management, electricity, water and gas, security. So these are all the different services that are provided by the government. Okay, now is the time for a project. So let's first look at the instructions. This project is given on page number 65. Quickly open the page. I hope everybody has opened the page. So now let's first look at the instructions that are provided for this project. Okay, visit your neighbors with elder siblings, parents, and interview them, at least 7 to 8 neighbors. Ask them about the problems they are facing in the mohalla. You can ask the following questions. Do you have enough water and gas? Is your living area clean? Do you enjoy all the health facilities? How is the hygienic condition of your area? How is the education system in schools made by the government in your area? Do you have easy access to public transport? Are the police or security officers of your area cooperative? So my dear students, आपने अपने करीब के किसी भी नेबर के पास जाना है और आपने उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं. आप उर्दू में भी पूछ सकते हैं और उसके बाद आपने उनके आंसर्स को नोट डाउन करना है कि उनको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर या गवर्नमेंट की तरफ से उनको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं. दिस विल बी अ वेरी फन प्रोजेक्ट. आपने क्या करना है कि आपने जाकर और उनको इंटरव्यू करना है. दिस विल बी वेरी फन. सो कलेक्ट देयर आंसर्स और उनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और आप इसके ऊपर डाटा के ऊपर एक चार्ट भी बना सकते हैं. So my dear students, after that what you will do is collect their answers and note them down in your notebook. So मैंने भी इंटरव्यू किया था अपनी एक नेबर का और अकॉर्डिंग टू हर आंसर्स मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है. जब मैंने उनसे पूछा कि वाटर शॉर्टेज, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके एरिया में प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ वाटर शॉर्टेज. और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न क्या है कि अननेसेसरीली वाटर को इस्तेमाल किया जाता है. सो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि वाटर मस्ट बी यूज्ड केयरफुली एंड फेयरली. नंबर 2, एक और जो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताया, उन्होंने मुझे बताया कि गैस जो है वो उसका भी शॉर्टेज हो जाता है, उसकी लोड शेडिंग होती है. और इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे लोड शेडिंग है. जब बहुत ज़्यादा लोग गैस को इस्तेमाल करेंगे, गीज़र्स ऑन होंगे, स्टोव्स ऑन होंगे, हीटर्स ऑन होंगे, तो फिर अल्टीमेटली गैस का जो है वो शॉर्टफॉल हो जाता है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देयर मस्ट बी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ गैस, नेचुरल गैस. गैस को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है. इसकी जगह बायोफ्यूल्स जो हैं, मीथेन, इथेन्स वगैरह जो हैं, इनको यूज़ करना चाहिए फॉर हीटिंग पर्पस. Okay, next is cleanliness. So no proper disposal of waste and trash. उन्होंने मुझे बताया proper pickups नहीं होते जिसकी वजह से कूड़ा बहुत दिन तक उनके घर के बाहर ही पड़ा रहता है. तो this was a complaint that she had. So मैंने इसको नोट डाउन किया और फिर हमने इसका सजेशन सोचा. So सजेशन क्या है कि local government, area government must take proper measures for regular trash pickups and garbage disposal. People should also dispose of garbage properly. So इसके लिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स को मिलकर काम करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर पिकअप्स करें और प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें गार्बेज को, और सिटीजन्स को चाहिए कि वो हमेशा कूड़े को एक प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करें जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है. एम्प्टी प्लॉट्स में फेंकेंगे तो कूड़ा वहीं पड़ा रहेगा एंड देन इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग एंड रॉट
हो जाएगा और फिर इसकी वजह से जर्म्स जो है वो फैलेंगे. सो ये उनके कुछ जो थे की प्रॉब्लम्स थे जो कि उन्होंने मुझे लिखवाए ड्यूरिंग हर इंटरव्यू. This is how you will do your work. Okay, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So what you will do is write the services of the government that you enjoy and also your responsibilities as citizen. So आपको पहले government की responsibilities लिखनी है और फिर आपको citizen की responsibilities जो हैं वो भी लिखनी है. Very easy. आपने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ी हैं जैसे कि प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी. सो ये तमाम सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. अब सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मस्ट बी ऑनेस्ट, फेयर, हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्ट लॉज, must be caring, must help others, must use things wisely. So these are the responsibilities of a good citizen. So you will pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's move forward. So my dear students, now is the time for evaluation. How can you play your part in the development of flourishing and prosperous society? एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, प्रॉस्परस सोसाइटी, कामयाब सोसाइटी बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? Quickly think, pause the video and then answer. I can keep my area clean, I can spread awareness, I can use things wisely and do not use them unnecessarily, do not waste things, help others, respect the law. So this is how we can make our society a better place. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. For homework, you will complete this project at your homes, interview your neighbor and then complete this table. Okay, so this is your homework, very easy. So my dear students, today we have learned that people in local areas often face different problems such as lack of education system, lack of health facilities, poor civil system, etc. Problems of people are solved by the government. As a good citizens, we should also cooperate with our government. So my dear students, अक्सर हमें problems होते हैं जो कि government हमारे solve कर देती है और हमें भी चाहिए कि हम government के साथ ताउन करें और उनके साथ चलें. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.